And along with my PhD, I was writing the civil services exam because I wanted to be in the services, but I could not clear my prelims during that time while I was doing my PhD. So I gave in 3 attempts along with my PhD. After that, there was a lot of broken confidence, a person completely thinking that ये तो नहीं हो पाएगा. But then I still wanted to persist, came to Old Rajendra Nagar to prepare. Then another attempt I gave, which was 4th attempt, solely preparing for the exam and not doing anything else. But then again, there was a failure in prelims, and 4 attempts are failed prelims, and only 2 left. And so I still remember meeting sir, and he suggested कि बच्चे SFG test लिखो और daily मुझे score भेजना. So just those 2 words I took away, and I made sure कि prelims की तैयारी अभी अप्रैल से शुरू नहीं होगी, prelims की तैयारी जनवरी से शुरू होगी. And full 5 months dedicated to prelims, writing each and every SFG test every morning 7 a.m. And it was very, very difficult. But then one thing was clear कि करना है, and writing all the tests of SFG made it possible to clear the prelims in the 5th attempt. And for me, in this entire journey was failing prelims 4th time, because I thought कि शायद PhD के साथ proper effort नहीं दिया तो नहीं हुआ. बट 4th अटेम्प्ट में पूरा साल पढ़ के भी जब नहीं हुआ तो मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करना है, बिकॉज आफ्टर माई PhD आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी जॉब, एंड आई टुक दिस डिसीजन कि यहाँ पे आके तैयारी करनी है, एंड दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट. द 3 क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम and which are inevitable in this whole preparation is, first of all, perseverance. Knowing the why of this journey, that is very important. I remember reading somewhere, if you know your why, the how becomes easy, and that is really true. If you know your why and उसको पकड़ के रखते हो, it is possible. Secondly, that is the reason I think ये आया, इंटरव्यू का कॉल आया. करंट अफेयर्स क्लासेस में बेस्ट बात है कि द कंटेंट इज़ वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट एंड फुल ऑफ क्वालिटी. करंट अफेयर्स की क्लासेस अगर वो डिलीजेंटली कर लिया जाए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, because it is so diversified and everything it is covered in that one page. So starting from the diagram, example, data, code, plus point, negative point, conclusion, everything in just one sheet. I think that is the sole, that is very important. Before coming आते थे तो बीच में he used to say कि you work hard, you put in your best. यहाँ नहीं होगा तो कहीं और कुछ होगा. So that used to like calm me down a bit, because it's a very tough journey. It takes a lot from you, and especially when you age, there is a lot of other pressures also from family. So and I did not take up any job after my PhD, so that was a big risk I had taken. तो दिपिन सर जो बोलते थे, मेहनत, put in your effort. If not here, somewhere else, but the efforts are rewarded. So I think that I also wrote this line and मैंने अपने सामने लगाया हुआ था, and he said, कम पढ़ो, you do not need to do many things, do less but do it again and again. This was what I took from Ayush sir, especially SFG. बहुत नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है. I think वो नियॉन का मेल्स था, मैंने वो प्रिंट आउट निकाला था. आई रिमेंबर सौम्या मैम, ऑल इंडिया रैंक 4, शी सेड कि वो प्रिंट आउट निकाल लेती थी मेल्स का. तो मुझे लगा कि ऐसी क्या खास बात है मेल्स में. तो एक मैंने मीनल करनवाल मैम का जो शी हैड रिटन हर एक्सपीरियंस ऑन फोरम, तो उसको मैंने प्रिंट करके अपने सामने चिपकाया था, और एक नियॉन का आर्टिकल था ऑन SFG टेस्ट, तो वो मैंने अपने सामने लगाया हुआ था. वन थिंग आई रिमेंबर इज we suffer more in our imagination than reality. So I am personally a person that because after so many failures na, you become like hope ही खत्म हो जाती है, but still you want to give in your best. तो बहुत बारी दिमाग में all these negative thoughts will just come around कि क्यों लिया decision, घर जाना चाहिए, ये करना चाहिए. But then we suffer more in our imagination than reality. Do not worry about the things that will not even happen, like failing the prelims and failing the interview because you had a very bad score in your graduation.
आई हैव दिस प्रिंटेड एंड इन फ्रंट ऑफ मी. तो जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट आता था, वी सफर मोर इन अवर इमेजिनेशन देन रियलिटी. मैंने पहले भी MGP टेस्ट ज्वाइन करे थे फॉर माई 4th अटेम्प्ट, बट दैट टाइम प्रीलिम्स फेल हो गया था. बट देन आई अगेन रजिस्टर्ड फॉर MGP एंड आई रोट एवरी सिंगल टेस्ट. एंड MGP में वन थिंग इट हेल्प वॉज कि मेरा कंटेंट बहुत रिड्यूस हो गया, बिकॉज when you're writing the tests, coming and forum provides a very good center to write the tests, thankfully. So you can come here and write the test in exam type of environment, घड़ी लेकर. And one thing I realized was कि इतना पढ़ना ही नहीं है. We keep collecting material, यहाँ से ये भी उठा लिया, वो भी उठा लिया. जब टाइम ही 7 मिनट मिलने हैं और पेज ही 2 मिलने हैं, तो उसी हिसाब से कंटेंट लेना है. तो टाइमली आई गॉट टू नो दैट वेरी लेस कंटेंट इज रिक्वायर्ड. You are supposed to complete the papers. Thirdly, presentation matters a lot. It is not just about content, it is about presentation, how you are writing the test. And fourthly is how to highlight the content which we have written. Example लिखा तो उसको highlight कैसे करना है ताकि examiner को दिखे कि example लिखा है. And